Hello everyone, welcome back to the channel. It's been long time I was lost. So finally I am here, brought you some good content that will give you a lot of insights in psychology. It might help someone preparing for their board exam, someone who might be appearing for their exams next year. So let me ask you one thing related to this video is all about. Have you ever wondered why some people ace exams without even trying, while others struggle but come up with the most creative ideas? Is intelligence just about numbers on IQ test or there is more to it? आई सी लॉट ऑफ पीपल बहुत हार्ड वर्क करते हैं एंड दे एस द एग्जाम. कुछ लोग हार्ड वर्क से अपना एस नहीं कर पाते बट यू सी हाउ दे राइट द आंसर्स, द वे दे प्रेजेंट देयर आंसर्स is commendable. Their creative side, their creative ideas of presenting the answer is commendable. Is intelligence just about number on IQ test or there is more? Today we will dive in two major ways psychologists understand the intelligence: the psychometric approach and the information processing approach. Trust me, by the end of this video, you will know exactly why intelligence is way more than just a test score. This video will cover both the approaches with their definitions, with their key theories and their applications. Psychometric approach, it is also known as IQ test approach. Alright, so let's start with the OG of intelligence testing, the psychometric approach. This one believes that intelligence can be measured using graphs, numbers, and standardized tests. Have you ever heard of the IQ test? Yeah, that this approach in action. So when we talk about who created the first intelligence test to measure the children's learning ability, it was Alfred Binet. तो कहीं भी इंटेलिजेंस की बात करो ना, सबसे पहले टॉप पे आते हैं हमारे एल्फ्रेड बेनेट, जिन्होंने इस फील्ड में काम करना शुरू किया था. अगर हम आगे बात करें, मूविंग ऑन टू द थियोरीज दैट आर included in psychometric approach, the first and foremost is the Spearman की two-factor theory, where we talk about the intelligence, which is one general ability plus the specific skills, जिनको हम S factor कहते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट थियोरी की हम बात करते हैं वो है थर्स्टोन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, which states कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक चीज नहीं है बट वो मल्टीपल स्किल्स से बना है, जैसे कि वर्बल, कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी एंड रीजनिंग. अगर हम और थियोरीज की बात करें तो नेक्स्ट इज कटेल की फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस. दिस इज माय पर्सनल फेवरेट एंड वेरी इंटरेस्टिंग थियोरी. द फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होती है वो होती है व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व द न्यू प्रॉब्लम्स, एंड ये इनिशियली तो बहुत हमारे अंदर एक्टिव होती है बट एज वी एज ये धीरे धीरे डिक्लाइन हुई रहती है. क्यों? क्योंकि हम एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो जाते हैं, हमारे अंदर लर्निंग्स आ जाती है, हम बुक्स पढ़ लेते हैं, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है. So that is where the crystallized intelligence come. It is the knowledge we gain from the experiences, knowledge from the book, experiences from our environment, and crystallized intelligence gets better over the time. अब अगर हम किसी एग्जाम्पल की बात करें, बिकॉज डेफिनेटली एग्जाम्पल जो होता है एक बोनस पॉइंट होता है हमारे लिए, हमारे आंसर को एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने के लिए. सो let's talk about Albert Einstein. He was not a great student in school, but
His intelligence wasn't about memorizing the formulas. It was always about deep thinking. अब साइकोमेट्रिक अप्रोच तो समझ आ गई, पर इससे क्या ऐसा होता है, इफ आईक्यू टेस्ट हमारी इंटेलिजेंस को डिफाइन करता है, तो अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो क्या हम उसको ये बोलेंगे कि इज अ जीनियस इन अ डिस्गाइज? इज दैट सो? ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशन, ये साइकोमेट्रिक अप्रोच जो होती है वो कहाँ यूज होती है? तो जहाँ पे हमें रिक्रूटमेंट्स करनी होती है, हमें स्क्रीनिंग्स करनी होती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि हमारा जो कैंडिडेट है उसकी एबिलिटीज चेक करनी हो, या हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, या हमें ये चेक करना है कि वो पर्सन एक जॉब में फिट है कि नहीं, देयर कम्स द यूज ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं वो हमें क्वांटिफायर में मेजर देते हैं, जिससे वो हेल्प करते हैं कि एक इंस्टीट्यूट एक एक क्वालिटी डिसीजन बना सके लोगों को हायर करने का और एकेडमिक प्लेसमेंट्स का। Okay, moving further, let's talk about another approach, that is information processing approach, which is also known as how you think approach. Now, this approach is more cooler, more modern on take on intelligence, the information processing approach. It is less about the test scores and more about how we think, how we function, how we process and solve the problem. Think of your brain as a supercomputer. It takes in the information, processes it, and then gives an output, just like a computer, just like a laptop. So I guess this approach might be inspired by the computers, the input, the processing, the storage, and the retrieval. Moving further, let's see what theories are included. Okay, so first and foremost theory is the Sternberg's triarchic theory of intelligence. It is further divided into three categories: the analytic intelligence that talks about book smarts, the creative intelligence that says thinking outside the box, and the practical intelligence that says street smarts. Another theory that is very interested and included in this approach is Gardner's multiple intelligence theory. There are not just one but the 8 intelligence it talk about: musical, spatial, kinesthetic, linguistic, and logical, and whatnot. These theories gives you a broader understanding कि कैसे हम एक इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो अब एग्जाम्पल की बात करें तो क्या एग्जाम्पल यहाँ फिट होगा? ओके, स्टीव जॉब्स. He wasn't the best student, but his creative intelligence made Apple what it is today. He thought differently and not just logically. अब मुझे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच भी समझ तो आ गई है, but if my brain is a computer, why can't I download the exam answers before a test? Yeah, great. Okay, moving further, let's understand the key differences because now we know both the approaches. Okay. So जो साइकोमेट्रिक अप्रोच होती है उसका फोकस होता है आईक्यू स्कोर्स पे, टेस्ट रिजल्ट्स पे, बट जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच होती है वो फोकस करती है हमारे थॉट प्रोसेस पे, कैसे फंक्शन करता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। जो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं साइकोमेट्रिक के, देयर इंटेलिजेंस इज मेजरेबल, whereas इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के होते हैं इंटेलिजेंस इज हाउ वी थिंक। साइकोमेट्रिक थ्योरीज में आती है स्पीयरमैन, थर्स्टन, कटेल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आती है स्टर्नबर्ग एंड गार्डनर।
अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो साइकोमेट्रिक जो होती है वो आईक्यू टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट में लगती है, whereas इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होती है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में लगती है। अब ये डिफरेंस समझ गए। अब इसके बाद मेरे दिमाग में ना एक चीज आ रही है। इस सब को देखते हुए मुझे ये लग रहा है, अगर हम स्कोर कर रहे हैं लो किसी आईक्यू टेस्ट पे, that doesn't mean you are dumb, because it just mean you are genius in another way. So अब बताते हैं कि which approach is the winner? Well, neither. Both are useful depending on the situations. The psychometric helps in academic and job settings, whereas the information processing helps in creativity and real life problem solving. And I feel we use both simultaneously, just like a chess player who use both the approaches. Calculating the move is the IQ, and thinking ahead creatively is a processing. Also, I would like to conclude it saying जो साइकोमेट्रिक अप्रोच होती है वो हमारी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए तो फोकस करती है, बट कैसे? स्टैंडर्डाइज टेस्ट से, एसेंशियली लुकिंग एट एंड रिजल्ट्स। सो साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड रिजल्ट्स देखते हैं हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज के, बट जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच होती है वो हमारे मेंटल प्रोसेसेस को देखती तो है कि वो कौन कौन से मेंटल प्रोसेसेस हैं जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व हैं। थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम यूज करते हैं और हम कैसे इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हैं। सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कहती है हाउ समवन थिंक्स rather than just outcome on a test. So, here, let's wrap it up today. We learned the psychometric approach, focusing on the IQ scores, information processing approach, focusing on thinking and problem solving. Neither is right and neither is wrong. Both matter. The question is, what do you all think? Is intelligence just about the IQ, the test scores, or is it more than that? Drop your thoughts in the comment. Also, if you found this video helpful, hit the like button, subscribe, and share it with someone who thinks intelligence is only about IQ. See you soon.